Entertainment. Entertainment industry is a major employment generator. To promote entertainment industry, single window clearance for ease of shooting films, earlier available only to foreigners, is now going to be made available to Indian filmmakers as well. Regulatory provisions will rely more on self-declaration. We will also introduce anti-camcording provisions in the Cinematograph Act to control the menace of piracy. हम सबको पिक्चर बॉलीवुड का भी शौक रहता है, पिक्चरें भी देखते हैं और ये इतने बड़े रूप में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। भारत में अन्य क्षेत्रों में फिल्म बनाने का काम बहुत बड़े गति से चल रहा है, तो उन सबको रोजगार मिलेगा, चाहे वो तेलुगु में फिल्म बने, चाहे मलयालम में बने। अभी हाल में आप सबने शायद देखी हो, मेरे को तो उरी पिक्चर देखने का सौभाग्य मिला। जो मजा आया, जो जोश था उस हॉल के अंदर, simplification of direct tax system to benefit taxpayers. Madam Speaker, for making the life of our direct taxpayers easy, we reduced tax rates more for the common man and middle class and made the interface with the tax department much simpler and largely faceless. Due to this, the tax collections increased significantly from rupees 6,38,000 crore in 2013-14 to almost 12 lakh crore rupees this year. The number of returns filed have also increased from 3.79 crore to 6.85 crore, showing 80% growth in tax base. I thank the honest taxpayers of India for reposing faith in our government. Let me assure them that we have used their contribution to serve the poor and create better infrastructure. अब उरी देखने के बाद कुछ तो सिनेमा हॉल्स के प्रति भी और सिनेमा देखने वाले सभी जनता के प्रति संवेदना की भावना स्वाभाविक रूप से आती है। सिनेमा गोअर्स जिनको अलग-अलग टैक्स के रेट्स होते थे और कई राज्यों में तो 50% से अधिक टैक्स लगता था, अब साधारणतः अधिकांश जो सिनेमा हॉल्स हैं उसमें मात्र 12% जीएसटी लगता है। Jan-Dhan, Aadhaar, mobile and direct benefit transfer have been game changers. Bank nationalization was first done 50 years ago, but a large part of the country was left out of the economic mainstream with no access to formal banking. In the last 5 years, nearly 34 crore Jan-Dhan bank accounts were opened. Aadhaar is now near universally implemented. This has helped ensure the poor and middle class receive the benefits of government schemes directly in their bank's account by eliminating middlemen. बिचौलियों को हमने समाप्त किया।